So with this taxation, they ask you, um, ये good tax system क्या है? What is a good tax system? Some places they even call it canons of taxes. So basically what we mean to say over here is कि अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, what should be the characteristics of it. तो हम कहते हैं अच्छा जी, जो टैक्सेशन का जो सिस्टम होना चाहिए वो नंबर वन equitable होना चाहिए. Equitable means that it should be fair. Okay, meaning that people in the same circumstances, pay the same amount. It should not be unfair to certain people and fair to certain people. एक जैसे लोगों पे एक किस्म का टैक्स होना चाहिए. This is basically, we say कि it's a horizontal equity. Equitable के अंदर दूसरा तरीका we say is that it should be fair in terms of rich and poor. ऐसा ना हो कि अमीर बोले हम पे अनफेयरली ज़्यादा टैक्स लग रहा है और गरीब कह रहा है कि हम पे ज़्यादा अनफेयरली टैक्स लग रहा है. सो वी से इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस सिचुएशन. देखो एक टैक्स सिस्टम होता है जिसको हम मार्जिनल टैक्स सिस्टम बोलते हैं, और ज़्यादातर इनकम टैक्सेस ग्लोबली इस परसेंटेज की बेसिस पे होता है. फॉर एग्जांपल, इन पाकिस्तान yearly, if you make an income of 4 lakh rupees yearly, okay, so if I take 4 lakh, I divide by 12, so that means around, if you make about 33,000 rupees per month, government will not tax you at all. ठीक है, गवर्नमेंट विल से 33,000 रुपीज़ पर मंथ और लेस अगर आप कमाते हो तो यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस. बट इफ यू मेक लेट्स से 40,000, अब आप 33,000 से ऊपर निकल गए हो, इफ यू मेक 40,000, तो गवर्नमेंट सेज ऑन द फर्स्ट 33,000 रुपीज you don't have to pay taxes. On the extra 7,000 you have to pay a very small percentage. ठीक है. Now I think that's quite fair because the government feels कि देखो 33,000 तो एक बंदे की अगर बेसिक इनकम है तो उसका रेंटल, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लोथिंग, इन बेसिक चीज़ों के ऊपर 33,000 अगर वो खर्च करता है तो वी डोंट नीड टू टैक्स हिम फॉर दीज थिंग्स. हाँ, इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग मोर इनकम्स and then your electricity bill starts to go up, or your entertainment starts to go up, the government feels कि उस extra income के ऊपर you should start paying a little more in taxes. और फिर जैसे जैसे तुम्हारी incomes ऊपर जाती हैं तुम पे tax percentage बढ़ता है, जो हमने progressive taxation के बारे में we've already spoken about. तो that's what we mean by fairness. नंबर 2, जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वी से दैट टैक्स शुड बी चीप टू एडमिनिस्टर. It should be cheap to administer. What this means is that जो आप कलेक्शन कर रहे हो
ऐसा ना हो कि कलेक्शन, देखो व्हेन यू कलेक्टिंग टैक्स, गवर्नमेंट का जो एफबीआर होता है ना, यू नो व्हाट एफबीआर स्टैंड्स फॉर, फेडरल ब्यूरो ऑफ टैक्सेशन। तो मुल्क का जो एफबीआर होता है, ये जो टैक्स कलेक्शन होता है, कहीं किसी कंट्रीज में उसको आईआरएस भी बोलते हैं। आई थिंक इन अमेरिका वी कॉल इट आईआरएस। सो बेसिकली आईआरएस के अंदर जो टैक्स कलेक्शन हो रही है, इट्स अ बिग डिपार्टमेंट with hundreds of people, in fact thousands of people working for them, in a big building with lots of computers, electricity bills, very expensive accountants and stuff as well. तो इसकी एक अपनी कॉस्ट है। ऐसा ना हो कि जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्चे कर रहे हो। इट्स डिफिकल्ट। ओके, सो वी वांट टू मेक श्योर दैट दैट डजंट हैपन, समथिंग लाइक दैट। इट शुड बी cheap to administer, meaning that tax collection should be more than tax collection expenses. That would be a good tax system. Other than that, we say that be it should be difficult it should be difficult to evade and convenient to pay. It should be difficult to evade. Evade मतलब चोरी करना मुश्किल हो. Okay, there should be proper systems in place which can catch you if you're trying to steal the taxes, if you're trying to report less than what you should. And at the same time, it should be very easy for people to pay taxes. It should not be difficult for them. It should be like आजकल तो होता है simple, आप अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन अपने टैक्स पे कर सकते हो without even like leaving your office. Okay, उसके अलावा वी से ये जो टैक्स होता है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे टैक्स फाइल करूं, एंड दे जस्ट फील दैट इट मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. If that is the case, then people will be reluctant to pay taxes. So you have to make sure that you make it the most easiest way that people can file their taxes. Okay, so we say that it should be easily understood and calculated by the taxpayers. ठीक है. And lastly, it should have limited disincentive effect. What this means is that it should not discourage people from work. Let me give you an example. Recent example है, COVID की example है. During COVID, that in the US and developed economies, the government decided that because of COVID, people are not able to go to work. Not all people are able to go to work. Some people are still able to go to work. So
they were given sort of like benefits, additional money. I won't call it unemployment benefit, but they were just given certain benefits because of the COVID. और हुआ ये कि people thought that if we go to work, we will not get these benefits. And they did the math कि अगर हम घर पे बैठे रहते हैं, हमारा को कोई फ्यूल चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, because the cars will not be used, kids will not be sent to the daycare or anything for people that applies to, you know, and then they don't have to buy a different clothing for office and stuff like that. And they calculated certain expenses and they say कि यहाँ पे हमारी savings हो जाती हैं. If we go to work, we'll have to do these certain expenses and then we'll have to pay taxes also. So they figured कि you know what, घर पे ही बैठना और फ्री के अंदर वो पैसे अगर मिल जाते हैं बेनिफिट, तो दैट्स एक्चुअली बेटर देन वी गोइंग टू वर्क. Taxation sometimes creates a disincentive effect. And now remember, the higher, the more you work, the more incomes you make. The more incomes you make, the more taxes you pay. तो फिर एक पॉइंट के ऊपर बंदा कहता है, सिंस आई एम पेइंग सो मच इन टैक्सेस, द मोर आई एम वर्किंग हार्ड, द मोर आवर्स आई एम गिविंग, मेरे उस आवर्स के ऊपर आई एम अर्निंग लेस एंड पेइंग टैक्सेस मोर, सो इट डजंट मेक सेंस, आई डोंट वांट टू वर्क सो हार्ड. तो ये डिसइंसेंटिव वाले इफेक्ट्स हैं.